Greetings everyone, this is me again, Zahra Bazak. Just waiting to see, okay, I'm live now. Okay, back on this topic of Islam. So now I've worked it out. This was very important for me. Uh, I was reading Al-Kafi. There's something missing, saying the intellect is the greatest creation of God. In Al-Kafi also you can see, volume 1 or book 1. Sorry if I make these mistakes, I cannot exactly tell you. But pressed with time and not prepared, I want to, go fast. So that's why I can't take you to Al-Kafi and show you where intellect is most important. God told intellect to come and it came, and God told intellect to go and it went back, coming forward and going back like that. So please, my broken English, please, this is very, very important to me. I've just figured out something. Yesterday I realized for many years I was confused if you're a Shia and you have been confused about this. What a reason, important revelation, consciousness, what is this? How do I bear witness to Allah being so small? Imam Hussein bore witness to Allah in that way by giving his everything and then saying, bearing witness. So if you have ever been confused in that, I hope I can help you in this. And although broken English and not well explained, but struggling, so you're welcome to join me, and please bear patiently with me as I make mistakes and all. Right? So this is the most important thing, that God, the one God that we cannot, for us Shias, Smileys and 12ers also, and maybe Boris. I haven't done much research on that, their thought in this or belief in this, that God is beyond the creation. God is not even energy of any kind. And when he says in Surah Nur, Allah is the light of the heavens and the earth, taking the Ismaili here in short article written on the point, maybe this light is also created, originated from Allah and not manifested. Created. So you can see the first thing here, which the Ismailis say, the soul is what are, okay, ask ismailinosis.com. You see, I started from here. The first thing created by God was the intellect. So even in Surah Nur ayat, the number I'm forgetting, Allah is the light of the heavens and the earth, and this light is like a niche and God knows crystal, and the tree is like olive and all this. It's from the olive tree. Why does Allah have to go through all these descriptions? And anyways, I could understand. Another thing is that Allah says in the Quran, I think, yes, we're not allowed to follow conjectures, guessworking, So what we are left with is the mind. And then I saw the mind. I reached the conclusion that mind is the culprit. Reason can only take you so far. And there are many philosophers, logic is good, but still, we need a premise, strong premise, and then we go by that. It's all theoretical. Logically, okay, logic does work. It's like maths, but even then we have, we find problems here. I cannot say it, but I'll be speaking like a layman, unprofessional and unprepared. So I've had some personal issues. I haven't been able to prepare for this even, but hope this will be interesting to look at. And please, for
caring for the Muslims. There's Ramadan also. I wish I didn't have to do this during the month of Ramadan, but hope no Muslim joins me here. And later on, maybe after they have opened their fast, they can come and look at this and listen to this. Hope in all this broken thing, language, broken me, it will make sense to you and it resonates with you. So we care also, and because of that, um, hope exception is for me and Prophet Muhammad and Allah, who broke houses in Surah Hashir, we are told, and why he did it. And when I break something here, no, I mean, I don't mean to break your heart or anything, no, far from it, or to deceive you. And then about not only, in Al-Kafi, what is Allah and all this, our Imam sayings are compiled by Al-Kulaini in the book called Kafi. This is one of the authentic books. Hope I'm not making a mistake anymore. Now I'm not making a mistake. Kafi, I know, is one of the four authentic books of Shia Muslims. Okay? 12 Shia, sorry, excuse me. Oh, so I had cough and threw up. Just having also herbal tea with milk tea. So please bear with me. So what have I found in my previous live stream? The soul also, you see, is it the spirit? Some say the soul is the spirit, and many schools of thought. Oh Lord, this is most important for me, that I survive. So I should, yes, not to forget to thank all those who have helped me. Abdullah Gondal, Abdullah Samir, Apostate Prophet, all in the beginning, Sarah Heather, Ex-Shia, ex-Muslim, also Sarah Heather. All the others who uploaded videos and tried to tell us, mostly it was from the Sunni hadiths, but the Quran errors, scientific errors, it has, so that was for me to look at as a Shia even. And so I've been really confused. But there seems to be scientific errors and all kinds of errors in the Quran. There are discrepancies, the contradictions. And for example, in my life, like as a Shia, when I came across, and I really tried to understand what it's trying to say, but I was shocked that Surah Nur, ayat 33, God has put it this way, and then as forgiving and merciful to whom? Right? And then Surah Azab, verse 37. But the thing is that, and Prophet Muhammad hid in his. So it's very, very interesting to note, very intriguing that how the Muslims, both Shias and Sunnis, come up with defending this Prophet Muhammad in Surah Azab, ayat 37, when he hid something in his heart. And he didn't tell Zaid, and he told Zaid. He didn't tell Zaid what was hidden in his heart, what Allah had revealed to him already. So that's implied. And so he told Zaid to keep his wife and fear Allah. Right? I couldn't figure that out, but I knew something was wrong here in this ayat, like that. And also about God and soul, and now God is beyond. So if you have any doubts about even Imam Hussein and Zain al-Abidin, Karbala and his sacrifice, you're gone case. Because you see, you can't have a doubt. If you have a doubt about them, then what happens to you? The Quran is not sufficient, right? And if you want to get to the Lord, like let's say, okay, you have a doubt, but you can't get to the Lord
It's trapped you. It's trapped you. You can't, because it says you can't get to that oneness, one God, the Creator, which is above His creation. Excuse me. I will be coughing now and then. I have this problem. The Creator above all, unlike His creation, right? Allah. So it gets you trapped. Like you have doubts about your imams and their sayings and all this, but then the great thing about the ayat was that you see everyone, Jews have made themselves children, and there's a ayat that Azar, I couldn't find it in the, there's a prophet Azar maybe, but in the Jews Old Testament, but there's no let me see, what I wanted to say is that there's no prophet Azar. Who's prophet Azar in the Bible? Azra, sorry, Azra. Okay, here I've made a mistake. I apologize greatly. Prophet Azra, not Azar. Azar is the father of the Azra and Azar. And I'm Zahra. Azar, what? Abraham's father, Azar. The Shia say he was an uncle. Abba, not Abba. He used to just call him Abba, Abraham. Because Abraham was monotheistic. Monotheistic. Yeah. Prophet Azra from the Bible. So I think, then I would look at this and say, oh yes, there is an Azra, Hebrew prophet, Jewish scribe and priest in the Bible. So children of Adam and this and that. Sorry, no, not children of Adam. What am I saying? Sorry, I have this slip of tongue too. Children of God. So now it really scares you and brings you back to that one God, right? Who has no partner, no resemblance to anything, none whatsoever. His attributes also you cannot. So you can read, you can't take him with his attributes because that would be shirk, polytheism. You would limit him and this and that. Imam Ali has explained this in his Najl Balagha. So please give me a chance and go through this of mine, broken language. I know it's not going to impress the people who want good language and all this, and you would say, I've been deceived thoroughly or with thorough deception. But then it's taken many years to find out that how deceived. And so see if you have also been deceived. So please give me a chance. Listen to my broken self, broken language, broken explanation, broken making mistakes here and there. See, jumping here and there, like whatever, monkey mind. And slow. What someone can put in 10 minutes, it takes me like more than a lot, 20 minutes or 30 minutes. That's how my live streams are even like this, slow and long for an hour or so. Okay, so you can read what Allah is not. He's not even his attributes. Imam Ali has explained in his famous, but this is not the authentic book. But still, Shias take this book, read it, and it's not one of the authentic books. So we have all these problems, you see, and so I had to just drop. Thank God I got Jiddu Krishnamurti books when I was in Karachi. Now we're learning, discovering. Even now I say this. So please don't come here with the conclusion that Islam is true and then give me from your side of ayats, or you are Sunni, you come from the Sunni side, or if you are a Shia, you come from the Shia side.
Or if you are an Ismaili, you come from the Ismaili side, right? Okay, this herbal tea is, I have had trouble breathing. Also, my nose was blocked yesterday. I think I worked it out and tears started to come out yesterday when I was listening to myself that, oh my God, so I've been explaining it to myself what I'm so overwhelmed. Even now, Surah Araf verse, excuse me, Surah Araf verse 172. So, what is the soul? So, how they have deceived us, the Imams. Sorry, excuse me. Just a minute, please just give me a... Sorry, I have to just mute myself for a moment. So, it's a pleasure here. I care for you and myself also, including, uh, so, uh, so you can see this Surah Araf verse 172. Although Bihar al-Anwar is, I took succinctly explaining to taking Imam Hussein saying from Bihar al-Anwar, although it is not one of the authentic books of the Shias. You can see the scholars, religious scholars, our own scholars, criticizing that poor chap, Allama Majlisi. He said he spent 37 years or 36 years. Wikipedia tells us, I checked, or even Wikishia, I don't know. But you know, the Google search websites tell me, and even then, you see, he compiling Imam saying with such scrutiny and all. Even then, our Shia religious scholars criticized him about certain things. That's why his books were not taken as authentic, Shia books. So you see how hard it is, like what we have to do. Oh goodness. So then also relying on whom? The religious scholars who have put their lives in this, blood, sweat, and risked their lives for this. Because against some Sunnis who have tried to kill them, you know, things like that. They've always had wars at loggerheads or even in conflict, even now. Like, if not wars, they are in disagreement with each other, Sunni and Shia. So I couldn't for the life of me understand that what is. Can you see? I mean, this is so sad. This is really sad, right? Where is it? Biharul Anwar. So yeah, I wanted to speak about this, my feelings, if it may not be surprising to you. You know, like how I also got angry at a Sayyid long time ago, Shias and all, who again came to tell me that Shia Islam is the truth on internet. And I was like, leave me alone now, you know. I mean, this is... So the religious scholars criticizing Muhammad Baqir bin Muhammad. This is very, very sad. So my heart had sunk. It was sinking. Oh my goodness. Imam Khomeini wrote, I didn't read this. Let me read it out here. Wrote, Bihar al-Anwar is the work of the great scholar of Hadith,
Muhammad Baqir al-Majlisi, which contains nearly 400 books and treatises. Bihar al-Anwar is itself a library. So now Khomeini are about to be lost. A library, and its author wrote it when he saw that many books, many hadith books are about to be lost and wasted due to their small size and being less accessed. The important point about writing of Bihar al-Anwar is that the author's limited usage of 4 books made it made it less important, a less important jurisprudential reference. And even though it has a great coverage of other fields in the Shia culture, it is not used in jurisprudential discussions as a common reference. So whatever this means, I'm totally like sorry. Some things, yeah, I'm low in comprehension also. It takes because I'm so shocked. I think that my mind it's cracked now. It's cracked with all this shocks, deception, and religion. So if you would still bear with me and be with me, maybe you can help me. Maybe I can help a fellow Shia to see. So, how we have been deceived thoroughly with a third deception. Okay, you might not believe me. That's why I have to come here again and again to get myself. Today I'm out of sorts. I'm not in worse than the previous condition. Things are coming to me that are shocking. My personal life also. So please bear with me. What is this now? Where shall I start? Here. Another thing is, what would the Shia say? Okay, it's come back to me what I was saying. That if you are Shia and you have some doubts, like when you read hadiths, and how can we ever be sure of this? Right? So, but if the Allah you go to through Christianity, then Jesus Christ is Son of God, God. If you choose this, if you choose the Jews, then it's something else. Then if you can't choose Hinduism, very few. Looking at first, you're looking at things, religions and way of life, everything is. It's very difficult for the polytheists to make us understand why worship murtis, idols. They're gods and goddesses and idols. So that also would fail, and you would come back here and say, oh, Imam Hussain sacrificed like I did. And if you're in doubt, another thing is okay, which is the best religion? So we're cutting down, right? Yes, this one, because then, even after death, because why is it the best religion? Because it is that oneness of Allah that everyone understands very easily, could understand, but not the atheist. So that one Allah, everyone, all religions say we have the same one God. Jews, Christians. I've heard my Christian friends are saying we have one God, right? We worship that God. Right. So correct. So all this, and then we cut. So we come back here, right? Because I can't for the life of me get Trinity. Sorry. So I can't get Trinity. Then Jews, I couldn't get Jews also. Because Corinthian love. No. Just kidding. Love. Oh, love. Love can make you blind. There is no love. See with love's eyes, and you will see such a deception you've never seen before.
Love covers your eyes. What kind of love is that? The truth my heart tells me, and time keeps its face alive. Time is a deception itself, Zara. So how my heart has deceived me. Hearts, yes, yes, yes. So we'll go to that ayat. Hearts have a tendency to go astray. Heart, soul of my soul. Michael Bolton song. Hearts have a, let's see, so then how do I see? Only Imams can show me. So what do? You go to the Imam. Hearts have a tendency to go astray. So I can't be a Sunni also. I tried my best. The wicked are estranged from the womb. The liars go astray. Oh, this is the Bible. So you see these verses in the Bible. Hearts have a tendency. Quran ayat. See how I'm forgetting. Very forgetful. You might not like this, but bear with me, please. In the end, being crippled, challenged physically, mentally, in every way, bleeding and going insane. Whoever Allah wills to guide, He opens their heart to Islam. But whoever He wills to, He leaves astray, He makes the chest tight and constricted. Muddar. There's this Jewish lady who wrote about Muddar in her book, The Taste of Hidden Things, Sarah Saveri. My grandfather used to say this poem for me in a what do you say these? Zahra Zaveri Kachmaveri. He was a Khoja Sindhi, you see. Have you seen him who takes his own lust as his illah? God. So maybe we can make our desires not in vain. Maybe God can say, okay, you have a desire, right? You have a lust. So I can come down and I can be why couldn't God do that? You see, this testing human beings is terrible. I can't find that verse right now, that hearts have a tendency to go astray. I think it's either in Ale Imran or where is it? So another ayat and then my mind just goes on. The ones who are grateful fully appreciate God's favor in making the true religion available to them and thereby intimating to them knowledge. How well written. Hearts have a tendency to go astray. Oh Lord, they say, here it is. This is the one, right? Our Lord, do not let our hearts deviate. Excuse me. After you have guided us. Grant us your mercy. You are indeed the giver of all bounties. Surah Al Imran verse 8. Zahra Jawad, are you taking us berserk now? Ex-Shia. Are you going to show us that our imams have lied to us and deceived us? Yes, we have two imams, Ismaili. Imam Ismail was from Imam Jafar Sadiq. Why in the world would such a thing happen? And then came Imam, then the Shia split. Imam Musa Kazim they went to. Yes, I'm telling you, right? And am I the authority? What authority do I have? I have no authority. But the Quran has something to tell us about this. That each one of you, if it tells the disbelievers
to ponder over the Quran ayats and see if there was any discrepancy, inconsistency, or contradiction, what will happen? It would have been from other than Allah. But the main thing is, what about this ayat? What is it? Who is it appealing to? Each and every individual. Sorry, I just moved, so the sound. Just dropped my mobile from my hand. Okay. Now, you see, each one of us has this thing, duty, responsibility given by Allah to ponder over the Quran ayats. So you may say that I haven't worked like the religious scholars, even your muftis, your Sunni Maulanas even, right? But it doesn't appeal to just a class of human beings, that ayat in Surah Nisa at 82. It appeals to all of us. So that also. Have I finished with this? Okay, I'll come back to this if I remember what hearts have a tendency to go astray. So what can you believe in? Or what do you do? So also this, look at Surah Nisa. If you're going to blame me that I don't know Arabic and why you are doing this, well, I'm learning through the Arabic ayat English translations. And if the Arabs can try to correct me. But which Arab? Sunni, Shia, Ismaili? You know, Egypt is the Imam was Ismaili Imam. Then they made it into Sunni. Egypt was the Ismaili place of this thing. How do you say it? After Firaun and Surah Nisa. Ayat 82. Sorry, I laugh a lot right now. I'm just laughing. Cracked. Do they not then reflect on the Quran? Had it been from any other than Allah, they would have certainly found in it many inconsistencies. Inconsistent. See, do they not? They are who? Arabs only? So, you see, okay, there's a reason why I wasn't taught Quran in Arabic. My Maulvi Sahib was too honorable. He was too honorable. He said, if I find a reason for this mistake that you have pointed out and you're correct about the mistake in written Allah, then I will, if I find a reason for it, I will come back to teach you Quran in Arabic. If I don't find a reason for it, I will not come back to teach you. So this also, that's why I didn't study the Quran in Arabic. So this. But let's see, I'm taking it in English translation, trying to be as precise as possible, give that word how many meanings it has, what words and all. I'm trying my best. So please bear with me. This is very, very important. Each one of us has a duty to understand the Quran, learn the Quran. So do they not reflect on the Quran? Had it been from anyone other than Allah, they would have certainly found in it many inconsistencies. Okay? So this. And then back to that. What is the soul even? So back to that ayat, Surah Arafat. And what is the soul? The soul is prone to evil. And even hearts have a tendency to deviate or go astray. So they have not left anything. And then the Shias also have not left anything for us to rely on in ourselves. Because those who have worshipped God through the, making sons and this and that,
associating things with God. I mean, we can't go to them, right? It's very difficult. Very difficult in the sense that for the polytheists to make us understand that this is okay. To worship God in this way is okay. I just have to put the light off now. So it's very difficult for them to explain to us. They will be told, if we had so willed, we could have bestowed guidance on every person. You see, even the Quran translation, if you read it like this, you would go astray. So you have to realize that how many times nafs is used, and what is this nafs? And what is the spirit? Distinguish between the spirit and the nafs. So I was doing all this and I was quite confused, but now I'm trying to show you struggling. Every soul, the guidance we would have given, meaning soul, nafs. See this? Surah Sajda, Ayat 13. Quran.com. No, it's not Isra. You know what? I think, okay, I've caught the Imams. So 12 she also say Ismaili Imam is not true and all that. I can catch them in that way too. Like this is, you can't afford this, you see? Because we would in every way lose, even when we have doubts. So we're told hold on to Imam Hussein. If I can't understand the story of Adam and Iblis and all this, Allah commanding the angels, what is this going on? Then I come back to Imam Hussein and say, okay, one day God will. I give it to Imam Mahdi on, please, I need to know the truth. See, where do you go? You go to the Ahlul Bayt also. And never occurred to your mind that they could be prejudiced? His daughter, Prophet Muhammad's daughter was given fadak, gifted. This is what she told Abu Bakr when he confiscated fadak from her. Things like that, you see. So how can you rely? Then the only hujjat, proof of God is Prophet Muhammad, and thereafter the Imams of Ahlul Bayt, his progeny, Prophet Muhammad's. So thank you to those who have helped me and not killed me. And I'm much grateful, so much that I cannot say that I am at peace in security. You don't have to worry about me because I think here, my father's country, where I'm from, has not killed me wherever I am. I could have had an accident, framed. They didn't do such a thing. They may have tried to discourage me or, for my betterment, for my well-being and safety, but what they haven't done is kill me. So can you imagine? I survived. Even if I was in Iran, they would have killed me. If I was in Pakistan, the Shias would have discouraged me, right, from doing this. So Shias, ask yourself, look at this the way I saw it, right? Look at my eye. Look at it through my eyes. Devastating. You see, we rely on them. And then God
cannot talk to us but through the curtain or in dreams, and we take istikharas of imams. So this happening through the son of Imam Jafar Sadiq is terrible. And what about and remember that what's his name, Hanif, Imam Ali's son, and Imam Sadiq, Imam Sajjad, Imam's fourth Imam, who was in Karbala, who survived. We are told in that prenatal state. I remember Allama Akil Turabi, late Akil Turabi's Majlis, or Allama Rashid Turabi's Majlis, who got up to say, "Oh Allah, I take this bearing after." Imam Hussain said, "I will take this sacrifice. I will see my son Ali Akbar and all this." But who said, "I choose to go with the ladies after Karbala"? I remember I was younger, teenage, maybe 11, 12 years old. Oh, but the Allama Rashid Turabi must have passed away, 1973. Oh, so I don't remember, but could it be Allama Akil Turabi's Majlis in Karadar during Muharram? Imam Sajjad got up and said that I will take that. When things get tough and rough, life gets worse. Seeing Bibi, Zanjeer mein hai Jakra, बीमार करबला को, बीमार Karbala is Imam Sajjad in chains, like captive and all. So Imam Sajjad in that prenatal state said, "I will." He got up. So God has asked each one of us. But then I was thinking from the Yazid side and all this, the other side, Fir'aun side, do they not, are they destined to, but had they chosen another path, then this would not have happened. But if these enemies, if these souls become bad, and if they choose for themselves this path and want to oppress people and the true believers of God and people on earth, then it's not necessary that this should happen, right? So that's how I reasoned with myself about this. So it's not destined. Yazid had an option whether to do this or not. And if Yazid willed, because of free will given to all, there's no compulsion in religion, Ayatul Kursi, in the Surah Baqarah verse, right? Part of Ayatul Kursi, I think. Or there's no compulsion. Truth stands out clear from error. Sorry, it's from that Surah Baqarah ayat. I think, so I don't know how to say this now. Okay, it's not that important anyways. But so now Yazid or any tyrant, any man who becomes evil, starts to harm people, because he chooses this path, then who will be the one to stop him? God asked, like that. And so Imam Sajjad got up in his prenatal state condition and said, "I will." Okay, so this much I have to explain. But the majlis was like about this Imam Sajjad saying. It wasn't explained, like I couldn't get it. Maybe it was explained, but I had to explain it to myself. Who do I think I am? No, just logic using. Because you see, from childhood I've been like this, trying to see things from all sides. Like that, okay? So I'm not showing off or anything.
Hello. Oh, Nanga Bhai is here now. He's Nanga Ram. राम ध्यान मालकिन ओलो नंगा भाई आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मालकिन कह के नंगा भाई ये नहीं कर रहे हैं ऐसे प्लीज़ नमस्ते आपको बहुत बहुत कहाँ थे आप वेयर वर यू अभी नंगा लाल से नंगा फिर नंगा राम हो गए नंगा हैज़ कम सो यू नो व्हाट मालकिन ये मालकिन जी आप क्यों बोल रहे हैं मालकिन इज़ लाइक अ क्वीन और सम माय गुडनेस अल्लाह नंगा भाई आप मुझे वो कर रहे हैं शर्मिंदा बहुत मैम आप कैसी हैं मैं बस गुजर रही है ज़िंदगी नंगा राम कह रहे कि मैम आजकल थोड़ा काम है अच्छा 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 आप काम में बिज़ी हो गए आजकल क्या इतने इतने दिन हो गए हैं 2 हफ्ते हो गए 2 वीक्स और समथिंग अच्छा रमज़ान की तैयारी कर रहे थे आप राम ध्यान नंगा राम जी नमस्ते आपको भी देखें आप भी अपने मालिक मालिक सब एक है सबका एक है मैं कैसे बोलूँ मैम इस मैम देखिए मुझे बहन कहें ये मैम मैम का चक्कर छोड़ दें इसलिए नहीं आ पाता हूँ अच्छा 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 आपको काम मिल गया है मैम मैं कहाँ रमज़ान हाँ नहीं नहीं आप तो राम हैं ना आई मीन आप अभी नंगा राम आप ना राम के हैं राम हाँ लेकिन आपने राम नाम कैपिटल लेटर में नहीं लिखा है तो ये रैम है अच्छा आप कंप्यूटर पे तो नहीं है रैम मैम आजकल खेत में मस्टर्ड कट रहा है ना इसलिए ज़्यादा काम है अच्छा मस्टर्ड कट रहा है यानी मस्टर्ड कट रहा है खेत है फील्ड fields of love if I lose my faith in you sting देखिए ये स्टिंग ये गोल्ड स्टिंग ने एक गाना गाया है तो आपको तो बड़ा गोल्ड वोल्ड मिल रहा होगा मस्टर्ड तो बहुत अच्छा है जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि इफ़ यू हैव फेथ एज मच एज अ मस्टर्ड सीड खेत के काम करने में बिज़ी हूँ अच्छा 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 आप खेती बाड़ी करते हैं मस्टर्ड यानी सरसों हाँ हाँ यही सरसों का है ना तेल भी मिलेगा आपको बहुत अच्छा है स्मेल नहीं है अच्छी तो अच्छा आप आपके पास फार्म है फील्ड्स हैं फील्ड्स ऑफ गोल्ड अच्छा है नंगा लाल मैं भी कभी सोचती थी नंगे राम अभी आपका नाम है सॉरी नंगा राम भाई मैं भी सोचती थी कि खेती बाड़ी करती फार्मर होती कितना अच्छा होता राइट आपने तो मुझे स्टिंग के गाने का भी याद दिला दिया है लिरिक्स क्या हैं मैम कहाँ गोल्ड अपने यहाँ खेती में कहाँ ज़्यादा फ़ायदा है हाँ लेकिन थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है फील्ड्स ऑफ गोल्ड यानी अगर हमें गोल्ड नहीं मिल रहा है मस्टर्ड भी तो ऐसे गोल्ड जैसे है ना उनका तेल मस्टर्ड का सरसों का तेल ऐसे लगता है मैम फॉरेन में तो फार्मर्स रिच होते हैं लेकिन आप जो इंडिया में हैं इसलिए रिच नहीं हैं हाँ नंगा भाई क्या करें it first appeared on Fourth Studio 10 Summoner's Tales 1993 लिरिक्स देखे lyrics name you'll remember me when the west wind moves a
अपॉन द फील्ड्स ऑफ बार्ली, ये बार्ली की, ये वो है ना, अपॉन द फील्ड्स ऑफ बार्ली क्या होता है, जौ, जौ का पानी क्या होता है, बार्ली से बना हो। हमने कहा, हाँ, मुझे कहते थे कि जीसस ने वाइन नहीं लिया था, जौ का पानी लिया था, बार्ली का पानी, वो हम बनाते हैं ना बार्ली शरबत। तो फॉरेन में फार्मर्स के पास बहुत बड़ी लैंड, नहीं नहीं छोटी लैंड भी होती है, होल्डिंग्स होती हैं, हाँ। तो ये है फील्ड्स ऑफ गोल्ड, यू सी। तो आप फॉरेन लैंड का छोड़ दें, मैं तो पाकिस्तान में फार्मर अगर होती ना पाकिस्तान में, इंडिया पाकिस्तान दोनों छोड़, PIDC, मैं थोड़ी अमेरिका जाऊं और फार्म बनाऊं। मैं तो सोच रही थी पाकिस्तान में एक फार्म बनाऊं, खेती बाड़ी करूं और सिंपल से लाइफ जीऊं, किसी किसी का मुझे तो बड़ा डर लगता है, ऐसे ऐसे धोखे हैं, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मैम आज फार्मर होते तो बहुत मेहनत करती। हाँ, वो है ना, एक आपका ही मूवी है ना, नरजिस जी उनमें है, जिंदगी जहर है, मदर इंडिया है ना, जिंदगी जहर है तो पीना ही पड़ेगा। ए जिंदगी क्या नाम दे तुझे, क्या नाम है तुम्हारा, जिंदगी जहर है तो पीना ही पड़ेगा, जहर, तभी तो नाम जहरा है मेरा, जहर है। वो मदर इंडिया का गाना है ना, मैं कहाँ, ये मेरा फादर रिच था ना तो मैं बन गई रिच एक वक्त, मेरा फादर भी अब ब्रोकन है। मेरे देश की मिट्टी की सोना उगले, उगले हीरा मोती वाला गाना सुना है आपने? नहीं, नंगा राम, मैंने ये गाना नहीं सुना है शायद। मेरे देश की, मेरा देश नहीं हो सकता है, और अच्छा, नंगा राम, मेरे देश की मिट्टी की सोना उगले, उगले हीरे मोती। नहीं, वो गाना नहीं सुना है हमने, तो ये सुना है कि वो एक है गाना, पाकिस्तान सोनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोनी धरती। बहुत अच्छा है, बहुत पुराना सॉन्ग है। अच्छा, तो आपकी एज क्या है नंगाराम, क्या आप इतने पुराने गाने सुन रहे हैं? अच्छा, मैं इधर सर्च करती हूँ, तो ये मदर इंडिया, देखें ये नरजिस जी हैं, दुनिया में हम आए हैं। हाँ हाँ, ये दुनिया क्या है, ओ दुनिया दुनिया, मैं तेरे बेद का मारा हूँ। मेरा थ्रोट सही नहीं है अभी, फिर से मुझे खांसी आएगी, थ्रोइंग अप होगा, क्या होगा। सॉरी, आई जस्ट हैड टू ड्रिंक सम टी। मैम, मैं पुराना नहीं हूँ, पर यूट्यूब पे तो सुन सकते हैं ना। हाँ हाँ, लेकिन आपको इतना पुराना गाना, मेरा ये मेरा इंडिया, आपने सुना है? आई लव माई इंडिया, मेरे देश की, ये किस मूवी का गाना है? धरती, मेरे देश की मिट्टी,
अच्छा, ये रिवाइवल तो नहीं हुआ देश की मिट्टी इन अमान की आशा, ये वाला है? हाँ, मेरे देश की मिट्टी। हाँ बाबूजी। और हमारे देश में बहुत मिट्टी है, बहुत मिट्टी है हमारे देश में। हमारे देश डेजर्ट है। शेख साहब ने गार्डन्स बनाए हैं, बहुत सारा बना लिया है। नहीं मैम, धरती होगा, धरती। मेरे देश की मिट्टी की सोना, की सोना उगले। अच्छा, ये बहुत पुराना, सोना उगले। आप कह रहे हैं कि ये इससे भी पुराना, मेरे देश की धरती। अच्छा, महेंद्र कप ये था 1960 ये। अच्छा, अभी मैं पैदा नहीं हुई थी, 1 साल। अच्छा, हाँ ये नहीं सुना गाना, पता नहीं, मूवी भी नहीं देखी है शायद, याद नहीं आ रहा है। फ्रॉम उपकार, यू मीन 1967? ये वाला? हाँ मैम, यही। अच्छा अच्छा, नंगा राम। तो मैं आपको याद कर रही थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, तो आप आ गए, देखें। ओके, तो बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुन के देखो, आपको मज़ा आएगा। अच्छा। पता नहीं, मुझे बहुत कम सॉन्ग अच्छे लगते हैं ये। मुझे तो वो ना मोहब्बत में जो धोखे वाले सॉन्ग है, मोहब्बत के सॉन्ग है ना, मोहब्बत जिंदाबाद, और ये, मुझे तो ऐसे ऐसे गाने अच्छे लगते हैं। होपलेस रोमांटिक वाले हैं ना। तो अच्छा, नंगा राम आए हैं। सॉरी, आई हैव टू टॉक टू नंगा राम अ लिटिल बिट, लेकिन नंगा राम हम जीत गए आज, एक्स मुस्लिम्स के लिए, सबके लिए। पता नहीं मुसलमान यहाँ नहीं आ रहे हैं, आएंगे भी किस मुंह से आएंगे, कि गालिब तुम्हें शर्म नहीं आती, राइट? अल्लाह बेचारे। No, we care for the Muslims, I'm just joking. So बहुत फ़ख्र था, एक नाज था कि अल्लाह के बाद रसूल है, और रसूल के बाद अली। मैम, आपको एक और सॉन्ग रेकमेंड करूँ? अच्छा श्योर, बताएं। और कौन सा सॉन्ग, कुछ ऐसे यू नो, ऐसे ऐसे सॉन्ग बताएं कि हम खुशी के मारे मर जाएं। ए ज़िंदगी, आप मेरा ये, आपने आनंद मूवी देखी है? मिसेस जीसा, अमिताभ बच्चन और कौन, ओह सर, मैं भारत का रहने वाला हूँ, ये सॉन्ग सबसे अच्छा है, आप लिरिक्स के फ़ैन हो जाएंगी। अच्छा, बताएं कौन सा सॉन्ग है? मैम, आप एक बार ये सुनेंगी तो आप बोलेंगी वाह, नंगे तुम्हें खुश कर दिया, तुमने खुश कर दिया। अच्छा, कौन सा है? कमिंग, 1 2 3। आपने वो सुना है नंगा राम? याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, हू हू, मैं माँ भारत का रहना वाला हूँ, ये है गाना। अच्छा, मैं, दिस इज़ द सॉन्ग टाइटल, मैं भारत का रहने वाला हूँ।
आपको तो अपना भारत बहुत अच्छा लगता होगा ना, जहाँ मोहब्बत है ना। आपको कभी दिल चाहता है कि आप फॉरेन जाएं, फॉरेन गांव जाएं? अच्छा, ये महेंद्र कपूर आपका फेवरेट है क्या? भारत का रहने वाला हूँ। ओ, ये महेंद्र कपूर की एक मूवी है, उसका सॉन्ग पता है क्या है? बहुत रोना धोना है। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को। हाँ मैम, बस एक बार इसका लिरिक्स देखो। अच्छा, नरेंद्र भाई मरे नो नो। अच्छा वो और एक ये है ना, एक, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। ये दीपक जला है, डॉक्टर दीपक चोपड़ा की जय। जला ही रहेगा तुम्हारे लिए। आपको लिरिक्स बहुत पसंद आएगा। अच्छा, आएगा, आएगी। अंताक्षरी, अंताक्षरी आएगी, 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 किसी को हमारी याद आएगी। फिर है। अच्छा, हमारे उर्दू में फिर है, आप फिर बोलते हैं। आप बोलेंगी नंगा, तुम भी काम का है। नहीं नहीं, आप तो काम के हैं नंगा भाई, ऐसे तो आप थोड़ी काम चोर हैं। ना आप काम चोर हैं, ना आप नमक हराम हैं। नमक हलाल का गाना कौन सा है? जवान है जाने मन, हसीन दिल रुबा, मिले तो दिल जवान निसार हो गया, शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया। ये क्या गजब हुआ, ये क्या जुल्म हुआ, न जान मैं, न जाने तू। ओह, परवीन बॉबी। देखो देखो दिन कैसे। तो ये नंगा राम, मुझे नहीं लगता मुझे ये भारत वारत का पसंद आएगा। लिरिक्स में आपको साफ साफ कह देती हूँ, ब्लंट हूँ। मुझे तो ऐसे ऐसे मोहब्बत के टूटे दिल कहाँ जाएं, और ब्रोकन हार्ट्स, वेयर डू ब्रोकन हार्ट्स गो, विटनी ह्यूस्टन। टूटे दिल कहाँ जाएं, टूटे ऐसे ऐसे गाने। और जिंदगी में नहीं कोई वफादार, जमाना सच कहता है। मैम आप एक बार सुनो तो। अच्छा, नहीं मुझे नहीं लगता मुझे अच्छा लगेगा, मैं सुनूंगी। लेकिन आजकल तो मुझे यू नो, मैं जिंदगी में हर वक्त रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे गाने मुझे पसंद है। मैम उसका टाइटल अच्छा नहीं है, पर आप सॉन्ग सुनेंगे तो आप मेरी तारीफ़ करेंगे। तो आपने क्या ये लिखा? अच्छा, आपने रेकमेंड किया है। नहीं नंगा लाल आपकी तारीफ़ तो आप भगवान, पता है आप ऐसे ना जो नीडलेस लोग होते हैं, मैंने इतनी कोशिश की है कि मैं काम करूं
और नीड्स को कम करूँ। आप कितने नीडलेस होंगे ना, तो भगवान की तरह आप हो सकते हैं। पता है, आप इतने करीब हैं भगवान, बस आप भगवान हो जाए। बिकॉज़ जो काम करते हैं, हार्ड वर्क और सिंपल फार्मर्स, नेचर के करीब, तो ना ज़्यादा कुछ नीड्स हैं। मैं तो नंगा हूँ, तो क्या हुआ? आप ये गाए ना, मैं काला हूँ तो हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। नंगा राम आपको क्यों इतना मुझे लगता है आपको इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ज़रूर कुछ है। नमस्ते। आप इतने सिंपल हैं और इतने वो है ना, तो आप अपनी सिंपलिसिटी पे देखें ना, आप में अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। आप अपने आप को नीचा क्यों करते हैं? नंगा हूँ, ये हूँ, वो। मुझे नहीं अच्छा लगता कोई अपने आप को ऐसे नीचे जो करता है ना। नंगा हूँ तो क्या हुआ, दिल वाला। हाँ, ये हुई ना बात नंगा भाई। आप अपने आप को नीचे नहीं करें। तो ये है। और क्या है? अच्छा, ये सॉन्ग मैं प्ले नहीं कर सकती इधर, फिर ना वो यूट्यूब पे पता नहीं, जब मैं गुस्से में हूँ तो करती हूँ, लेकिन प्ले नहीं करती हूँ। तो इसलिए कि कॉपीराइट्स इन्फ्रिंजमेंट है ना। तो ये है नंगा भाई, लेकिन आप रिलीजन में नहीं है ना, हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं रमज़ान है और फिर मैं मुसलमानों को, एक तो ये मुसीबत है ना रमज़ान में। मैम आप एक बार ईयरफोन लगा कर सुने तो, यानी मैं अभी सुनूं? आप भी नंगा भाई क्या? अच्छा, ये वाला। तो फिर मेरा लाइव स्ट्रीम तो चले जाएगा, लेकिन इधर मैं नहीं सुन सकती हूँ, ये रिलीजन के लिए है ना। वो आलिम वालिम तो छोड़ देंगे, आएंगे नहीं। नंगा भाई मैं बाद में सुनूंगी, अभी नहीं सुन सकती। ये रिलीजियस वो है ना, थोड़ा ऐसे ऐसे गाने सुन सकती हूँ, गा सकती हूँ, लेकिन आई कैन नॉट लिसन टू दिस। नंगा भाई ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा है, अ मेन थिंग। यू सी, मुझे अब किसी में भी दिलचस्पी इतना, हाँ ऐसे गाने आते हैं जब मैं ये कर रही हूँ तो उसमें मज़ा आता है, वरना नहीं आता है मज़ा, कुछ में भी मज़ा नहीं आता है। इसी नंगा भाई सॉरी, मैं इसमें बहुत हूँ, मुझे लोगों को सेव करना है, मुसलमानों को, तो माफ़ करना, ठीक है। मैं गाना अभी लाइव स्ट्रीम पे ख़ुद सुनूं तो अच्छा नहीं है, और ये रिलीजियस केस है ना मेरा। ओके, सॉरी, मैं आपको, आई होप आप मायूस ख़राब नहीं फील करें, मायूस नहीं हो। या यू सी, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। इधर हमें ऐसा धोखा मिला है, लेकिन अच्छा है, लाइट। मैं माफ़ी नहीं, नहीं माफ़ी वाफ़ी तो मांगे नहीं ऐसे आप मुझसे, नंगा भाई माफ़ी नहीं मांगे। मैं माफ़ी मत मांगो। हाँ हाँ, अच्छा, हाँ आप बहुत अच्छा, मेरा दिल विल थोड़ा सा बहल
हाँ, आओ मुझे बहलाने जलता रहे परवाना, मैंने तो की तुमसे वफा, तुमने नहीं पहचाना। उप्स, ये हेड भी हो सकता है हम मेरा ड्यूरिंग आई मीन शोइंग दिस। नंगा भाई, आप क्या कहते हैं इस रिलीजन के बारे में? आप क्या कहते हैं? वी आर टेकिंग अ ब्रेक, हम लोग ब्रेक ले रहे हैं। मैम, आप मुझे सॉरी बोल के शर्मिंदा मत करो। तो नंगालाल, मैं क्यों सॉरी नहीं कहूँ? क्या मैं ऊपर से आई हूँ क्या? हाँ। एक नन्ही परी मेरे घर आई, ओ मैम, मैं क्या ही कहूँ। अच्छा, आप क्या कह सकते हैं? आप तो हिंदू हैं। आप हिंदू हैं या एथियस्ट हैं नंगालाल? देखिए नंगालाल, मैं जीती जीती मैंने इधर तक मैं लाई हूँ मुसलमानों को। अपने आप को भी मैं लेके आई और समझा दिया अपने आप को कल लाइव स्ट्रीम पे। ये बहुत हैवी चीज़ है। आप मैम, हिंदू ही हूँ। अच्छा, तो आप कौन से भगवान पे कोई भगवान आपके लिए है या नहीं है? मानते हैं या नहीं मानते हैं? जानते हैं या नहीं जानते हैं? ज़हरिज़म को फॉलो करता है हूँ मैं। ये ज़हरिज़म क्या होता है? ये तो मेरे नाम पे जा रहा है। व्हाट इज़ ज़हरिज़म मैम? आप किस आप कोई हिंदू विंदू नहीं है नंगा भाई, ऐसे मजाक कर रहे हैं। ओह गुडनेस, ज़हरिज़म मैंने तो नहीं सुना है ज़हरिज़म। मेरा दिमाग अब मैंने देखिए आप पे भरोसा किया और आपने कहा ज़हरिज़म। ज़हरिज़म कहाँ है? ज़ोरेस्ट्रियनिज़म, यानी आप पारसी हैं, हिंदू नहीं है। नहीं, ज़हरा मैम का रिलीजन। हाँ, मेरा अगर कोई रिलीजन हो तो आप मुझे मार डालें, तौबा करें। मैं कभी कोई रिलीजन को मानती नहीं हूँ। अभी इसके बाद किस रिलीजन, ओह सॉरी एक्सक्यूज मी, ये तो मैं तो हाँ, देखिए नंगा राम, आप क्यों मुझे इतना ऊपर रख रहे हैं? वो कौन सा गाना है? मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। ये सब गुरु जी, हमारे जो गुरु हैं ना, श्री श्री रविशंकर जी, और ये हमें सिखाया, हमें कोई शर्म ही नहीं आती है। कहा कि आई डू नॉट फील एनी शेम इन दिस एंड दैट। तो मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना जीना, ओ जीना वो दिन कभी ना आए। मैम, आप मेरे लिए कोई प्रोफेसी करें। मैंने आपको बोला ना कि आप भगवान आप भगवान हैं। आप भगवान से दूर नहीं हैं, आप भगवान हैं। आप छुपे रुस्तम भगवान। नंगा, आप कौन से भगवान हैं? आज हमें बोल दें। तो नंगा राम, पागलपन में मैं भी समझने लगी कि मैं राधा रानी हूँ, लेकिन हूँ नहीं। तो ये है ना। रिलीजन कुछ नहीं है।
रिलीजन देखें, नंगा राम आप भगवान हैं। देखें, जो इंसान अपने आप को कुछ नहीं समझे ना, वो क्या होगा? ओहो, वो क्या होगा? वो इंसान नहीं, भगवान होगा। नंगा राम आपके लिए गाना है। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। मुझे दे बता, हाँ, हाँ, तेरी चाहतों ने पूजा मेरा प्यार कह रहा है, मैं तुझे खुदा बना दूं। You see, नंगा पाई, जो नंगा है, जो कुछ भी नहीं है, वो क्या है? वो क्या है? A.R. रहमान का एक गाना है, जब कुन कुन फयकुन बी एन इट इज, जब कुछ नहीं था, वही था। वो क्या है? वो आप हैं, वो मैं हूँ, वो सब है। एवर लिविंग, एवर लास्टिंग। नंगा भाई, आप सो गए? लास्ट टाइम यू लेफ्ट मी, फिर पता नहीं कौन आया था, सलाहुद्दीन या कौन आया था ब्रदर। नो फास्टिंग फीस्टिंग। सॉरी मुसलमानों। ये एक मुसीबत है फास्ट। मैम आप मेरे लिए कोई, हाँ, प्रोफेसी, क्या प्रॉफिट तो मैं हूँ नहीं। अभी अगर आज की बात कर रहे हैं तो मैं आज, कल, कल, कल क्या? दोस्तों मुझे इतना प्यार नहीं दो, मेरे कल के लिए भी कुछ रखो। प्रोफेसी तो प्रॉफिट्स करते हैं। देखिए, मैं प्रोफेसी नहीं करती हूँ, इसलिए कि कहा गया है कोरिंथियन बाइबल में, राइट? मैं प्रोफेसी नहीं कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? दिल को दिल से राह होती है नंगा भाई। तो मुझे नहीं कहेंगे प्रोफेसी करें, इसलिए कि आपको इंग्लिश तो आती होगी। If I speak in the tongues of men or of angels but do not have love, I'm only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I'm nothing. No, I'm worse than nothing, because nothingness is the best. If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but do not have love, I gain nothing. Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast. It is not proud, it does not dishonor others. It is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. आप समझ रहे हैं नंगा भाई? Love never fails.
But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part, and we prophesy in part. But when completeness comes, what is in part disappears. तो ये हमारे सब गुनाह कैसे रॉन्ग कैसे डिसअपियर होंगे? अल्लाह ने हमें कहा है कि शहादत लो एक वक्त, अपने पार्ट्स को कहा है, या अपनी क्रिएशन को कहा है कि मेरी शहादत लो, एम आई नॉट योर लॉर्ड? अब शहादत कैसे लेंगे? क्योंकि ये बाइबल वर्स भी कह रही है, अगर हम पार्ट्स में होते तो कंप्लीटनेस क्या करता है? मेक्स पार्ट्स डिसअपियर. When I was a child, I talked like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. लेकिन बच्चों में एक बहुत अच्छी चीज़ है, innocence, moment. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. For now we see on, but Heather, adults भी क्या होते हैं? What adults? They're worse than children. For now we see only a reflection, as in a mirror. Then we shall see face to face. Now I know in part, when I shall know fully, even as I am fully known. तो fully तो जानो कि क्या है, ये कैसी शहादत ली है अल्लाह ने. सूरह आराफ में है, वर्स 1 आयत 172. तो फिर ये सब चले जाएगा ना जो पार्ट्स में आता है. And now these three remain, faith, hope and love. But the greatest of these is love. So with love, what do you do? I think love dissolves all differences, hatred, everything. मोहब्बत है. ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो ज़मीनों की तरह सरहदों में तकसीम नहीं हो सकता. अमिताभ बच्चन इन सिलसिला. ये मोहब्बत क्या है? बंदगी. मोहब्बत ज़िंदगी है. मोहब्बत क्या गाया मेहदी हसन ने? मोहब्बत ज़िंदगी है, मोहब्बत बंदगी है. और तुम मेरी मोहब्बत हो. ये इबादत है, इबादत. ये बेस्ट है, बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप टू गॉड. अभी परमहंस विश्वानंदा ने क्या गाया है? आपके ही हैं, मैं आपको दिखाऊं. सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची. ये सबसे ऊंची है. ये जगजीत सिंह ने भी गाया है और ये परमहंस विश्वानंदा ने भी. आगे का मैं प्रोफेसाइज क्यों करूं? आज आप क्या हैं, कल क्या थे, और कल आने वाला कल क्या होगा, ये मुझे नहीं पता. राइट? तो कल जो आपने किया, आपने अमेंड किया, उसको ठीक किया. अब आप कुछ डिफरेंट है. हम बदलते रहते हैं.
आज जाने आप आज क्या है, अभी आप सो नहीं जाना इस पे। देखें ये ईगो आएगा आपका, बिल्कुल आप नंगा रहें, एम्प्टी रहें, एम्प्टी, एम्प्टी योरसेल्फ, बी नेकेड, यू हैव नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। बिल्कुल नंगा रहें, कुछ जैसे कपड़े नहीं हैं, कुछ नहीं है, हम नंगे हैं। एम्प्टी, एम्प्टी। ना ग्रूमिंग ना कुछ। जैसे आप हज पे जा रहे हैं, हज पे हैं मुसलमान, अगर यहाँ हैं, पता नहीं अभी कितना वक्त हो गया, आई डोंट थिंक दे विल बी इंटरेस्टेड इन व्हाट नंगा राम एंड आई टू स्पीक इन उर्दू, कम्युनिकेट। तो नंगा भाई आप हैं अभी तक या गायब हो गए, चले गए खेती बाड़ी करने के लिए? प्लीज़ इधर थोड़ा मेरे साथ रहें और ये देखें मैं क्यों आपके बारे में प्रोफेसी करूं, आप क्या सुनना चाहते हैं। आप, मैं कौन होती हूँ? ये दुनिया के बदलते रिश्ते न जाने कैसे पल में बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, मैं भी बदल सकती हूँ। तो प्लीज़ ये ज़हराइज़म और ये आप मजाक कर रहे हैं, ठीक है, मैंने मजाक में ले लिया। राइट, you're joking, so I've taken it as a joke. लेकिन इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। लेकिन कोई ज़हराइज़म, कोई प्रोफेसी, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कह सकता। आजकल ज़माना, ज़माना तो है ही ऐसा, बदलता रहता है। आप आवारा रहें, आवारा। आवारा ये आवारा मूवी का सॉन्ग सुना है, राज कपूर जी? आवारा हूँ, यहाँ गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। So something is wrong. Nangabai, we've reached a milestone. Is search me, excuse me. Oh God, now I have this. Sorry, I have to have my. Oh, गले में कुछ अटक जाता है. It's going to my windpipe or something. तो नंगा भाई आप हैं या आप चले गए? देखा, नंगा भाई चले गया छोड़ के। यहाँ तो अगर नंगा भाई के साथ ये करो ना, तो नंगा भाई आप कहाँ हैं? यहाँ तो सो जाता है, चले जाते हैं। कुछ भी नहीं, nothing, that's nothing. Nothing is the best thing. बोले की जय जय, शिव जी की जय जय। तो ये कहते हैं कि ये मोहम्मद है। अभी देखें, इस्माइली कहेंगे, इस्माइलीज आर गोइंग टू से that this is Muhammad, the light, the first. और इमाम हमारा गायब हो गया, सलीम लालानी उनके पीछे पड़ा है। बहुत अच्छा इमाम है हमारा, इस्माइली इमाम, मौला बाबा, प्रिंस करीम, अलमा सांची कहती थी ना, शी वॉज इस्माइली। तो आई विल कम अगेन. This part I think has ended and Nanga Rambai has gone to sleep. So I will come again for this. This is very, very important to me. I will have to listen to myself and cry that I was given this opportunity. Bale, thoda sa, even though in broken English, do you see where I've reached in my search for truth, even challenging my imams and all, and my religion? Toota poota,
broken, deceived, uh, not educated in this. Alim, no religious scholar. Nanga Bhai, तो बेस्ट विशेस आपको, गॉड ब्लेस, आप तो भगवान हैं। ये नहीं भूलना बस, ये कैसे याद रखना है, याद भी नहीं रखना है, लेकिन ऐसे कि फुली रियलाइज करें कि यू आर गॉड, यू आर डिवाइन in this pure awareness, what is here, presence ever living, ever all sustaining. तो हम आयतुल कुर्सी ऐसे नहीं बोल रहे हैं as a Muslim, we're seeing it for ourselves. Allah, I am. There is no God, but I am. The ever living, the self-subsisting, the all-sustaining. तो ये खुदा को जो अदर कर दिया ना, अदर अपार्ट फ्रॉम हिज क्रिएशन, ये पूरा बहुत बड़ा धोखा हमें मिला है। इस धोखे को मुझे दिखाना है, बार बार इधर आना है. Every time I have to come here to show you. And the next section, in the next session, part 3, I'm going to continue, take a break. Thank you very much, Nanga Ram Bhai. आपने हमारा थोड़ा बोझ हल्का किया, थोड़ा लाइट हार्टेड वे में हम बात किया, आपके साथ हमने बात की, और हम वापस आएंगे इस टॉपिक पे, नंगा भाई का टॉपिक नहीं, लेकिन और फिर मैं आपका वो सॉन्ग भी सुन के आई विल कम बैक टू कंटिन्यू. थैंक यू सो मच.